नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित परारकर और ये है मारुति सुजुकी की नई 4th जनरेशन स्विफ्ट। दे कॉलिंग इट दी ऑल न्यू स्विफ्ट। ऑल न्यू है कि नहीं इसको हम रिव्यू में एड्रेस करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल गौर करते हैं इसके डिज़ाइन पे। सो द डिज़ाइन इज़ एन एवोल्यूशन ऑफ द करंट स्विफ्ट। मतलब आपको एक सिमिलर शेप मिलने वाला है। इवन द शेप ऑफ द हेडलाइट्स इज़ दैट सिमिलर, रैप अराउंड और रादर स्वेप्ट बैक शेप, बट यू आर गेटिंग दिस एलईडी शेप DRL। उसी के ऊपर आपको ये प्रोजेक्टर एलईडी लैम्प मिलने वाला है। उसी के नीचे यू आर गोना सी दीज टर्न ब्लिंकर्स विच आर गोना बी द नॉर्मल फिलामेंट बल्ब, और नीचे बम्पर में यू आर गोना सी द फॉग लाइट। नाउ द इंटरेस्टिंग बिट इज़ दैट ये फॉग लाइट आपको सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में ही मिलने वाला है। सिमिलरली यू आर सीइंग दिस डायमंड कट व्हील्स, दीज आर 15 इंच इन साइज़। इसके ऊपर 185 सेक्शन के टायर्स, अगेन अवेलेबल ओनली ऑन द टॉप स्पेक ट्रिम। लोअर वेरिएंट्स पे आपको 14 इंच के व्हील्स मिलेंगे। अब जो अदर बिग डिज़ाइन एलिमेंट दैट इज़ द कैरेक्टर लाइन, जो आपको ये बॉनेट लाइन नज़र आ रही है। दिस इज़ अ न्यू क्लैमशेल बॉनेट। सुजुकी का लोगो यहाँ ऊपर बैठा है, नॉट इन द ग्रिल एनी मोर। ग्रिल की ऑर्नामेंटेशन काफ़ी कम कर दी गई है, नॉट टू मच क्रोम। इवन द सुजुकी लोगो, लाइक आई सेड, इज सिटिंग ऑन टॉप। एंड ये जो डिटेलिंग है दैट इज़ वेरी मच लाइक व्हाट वी हैव सीन ऑन द अदर नेक्सा व्हीकल्स, लाइक मे बी द बलिनो, द ग्रैंड विटारा एक्सेट्रा। नाउ कैरेक्टर लाइन की मैं बात कर रहा था, सो इट रन्स अक्रॉस all across the length of the car. You will see that becoming the shoulder line. यहाँ से clamshell bonnet से निकल के it becomes the shoulder line, and this is the dual tone scheme that you see here. This is the new orange, novel orange is what they are calling it, और जो ऊपर है वो blackish bluish color combination. I think it looks quite nice. In fact, there is a new paint technology that they are employing globally, but I don't know if they are doing that for India. इसके बारे में भी हम रिव्यू में बात करेंगे. Now that same character line comes all the way to the back and it joins the tail lights, और tail light में आपको यहाँ पे ये नया angular detailing नज़र आएगा. Again it's a swept back और a wrap around tail light, smoked effect just like the headlight, तो वो भी यहाँ पे किया है. और अंदर आपको यहाँ पे you will see the LED blinkers again, and then a conventional bulb down below. Now the highest top lamp is right here. You are also going to get the rear wash and wipe that you see right here, and this is the Suzuki logo. Now that character line flows through the tail lights and becomes prominent even on the boot. यहीं पे आपको एक वाइड एंगल रिवर्सिंग कैमरा नज़र आएगा, एंड देन देयर आर 4 रिवर्सिंग सेंसर्स एज वेल. द लोअर एंड वेरिएंट्स आर नॉट गोइंग टू गेट दिस कैमरा, उसमें आपको सिर्फ रिवर्सिंग सेंसर्स ही मिलेंगे. एंड इन टर्म्स ऑफ द बूट स्पेस रिमेन्स अनचेंज्ड, लेकिन 60-40 स्प्लिट सीट आपको मिलने वाला है. एंड when you look at the spare wheel, it is a space saver. 80 kilometers की max limit is going to be a 14-inch wheel, and I think shot with 145 section tires if I'm not wrong. You get this boot lamp, you get a little hook here for some knickknacks, and आपका jack वगैरह सब यहाँ पे जाने वाला है, whereas the safety triangle will be put right here. You also get this parcel shelf, which is again exclusive to the top end variant, not on the low end variants. And then of course no electrical system here. It's a budget car at the end of the day. We'll come to the price in a bit. So ये है इसका rear end look. Let me know what do you think about this. I think it looks quite smart from the rear as well, especially this detailing of the tail lights is really good. Now you get this little spoiler kind of element at the back. इसी के ऊपर आपको wash का element भी मिल रहा है. Like I said, a high stop lamp. Unfortunately, no fog lamp in the bumper like the original Swift. I think that would have been a nice touch. They should have done that. I also like the angle that they've given for the rear door. लेकिन एक चीज़ आपको नज़र आएगी कि the door handle is now moved here. It is not in the C pillar anymore. पहले C pillar में हुआ करता था, but it's now moved to the side. And in terms of the design, I think that C pillar handle looked better. Let me know what do you think about that. जो pillars हैं सबके सब blacked out हैं. C pillar, B pillar, A pillar, everything is blacked out, so that gives you that floating roof effect that you want, and you'll get a similar blackish bluish finish even on the ORVMs, and it has the turn blinker right inside. Now friend here is opening the clamshell bonnet. तो जो engine है that is also new. 1197 सीसी का ही इंजन है, अगेन लाइक द प्रीवियस कार, बट वो 4 सिलेंडर था, ये 3 सिलेंडर है. इट इज़ अ लिटिल डाउन ऑन पावर. 80 PS के आसपास पावर आपको ये देगा. बट द मोर इम्पॉर्टेंट बिट इज़ दैट इन टर्म्स ऑफ द एमिशंस, इट इज़ लोअर ऑन द एमिशंस नाउ, 12% lower on the CO2 emissions. And in terms of the fuel economy also, it is now a big improvement. So basically जो manual transmission है उस पर आपको 10% better fuel economy मिलने वाली है, whereas on the AMT you're going to get 14% better fuel economy. So अगर numbers की बात करें तो AMT is going to deliver 25.75 kilometers to a liter, and manual is going to return 24.8 kilometers to a liter. Those are the claimed figures, of course. 12% CO2 emissions reduction,
और एक्सेलरेशन जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 10% से बेटर है इज़ व्हाट मारुति इज सेइंग, एंड देन 3.5% बेटर इनिशियल टॉर्क एज वेल. अब ये कितना सच है, डू यू रियली फील इट, हाउ क्विक इज़ दिस कार, एवरीथिंग इज़ समथिंग दैट विल आंसर इन आवर रिव्यू. तो उसके लिए डेफिनेटली रुकिएगा. अप्रॉक्सीमेटली 16 मई के आसपास हमारा रिव्यू आएगा overdrive पे, सो youtube.com/overdrive पे उसको चेक कीजिएगा. नाउ इन टर्म्स ऑफ द सेफ्टी, यू आर गोना गेट 6 एयरबैग्स इन दिस कैबिन विच इज़ स्टैंडर्ड. तो लोएस्ट वेरिएंट पे भी आपको 6 एयरबैग्स मिलने वाला है. In terms of the brakes, you only get this at the front, drum at the back. You're going to get 3-point seat belts on all the seats with the seat belt warning, which can get a little annoying in Maruti cars. Why? I'll tell you in my review. क्योंकि वो लगा के रखना पड़ता है even if you're not sitting in the seat, right? So we'll get into the cabin once we have lesser crowd. But in terms of the platform, it's still the hard-tech platform, but uses 45% high-strength steels, out of which 20% is ultra high-strength steel, right? So that is the other bit. अब एक बार हमारे दोस्त कार गुरु यहाँ पे बैठे हैं, तो एक बार लेट्स जस्ट सी व्हाट द स्पेस इज़ लाइक. सो ज़्यादा स्पेस इम्प्रूवमेंट है नहीं ओवर द आउटगोइंग कार. थैंक यू सो मच सर. सो दैट्स द काइंड ऑफ स्पेस दैट यू आर गोइंग टू गेट. एंड आगे की तरफ भी एक बार गौर करेंगे, बट यू विल सी दैट इट्स गॉट ऑल ब्लैक इंटीरियर्स. अगर आपको ब्लैक एंड बेज चाहिए तो आपको पता है क्या करना है, यू हैव टू गो एंड लुक एट द स्विफ्ट डिज़ायर इंस्टेड. So now in terms of the infotainment, you're going to get a 9-inch infotainment in the top end variant, जबकि lower variants पे मेरे ख्याल में 7.25 or something, if I'm not wrong. That is the size that you're going to get for the lower variants. Now let's try and again get a sneak peek there. Our friend is taking quite some time here on the inside. So anyway, so in terms of the instrumentation, जो बीच में आपको नज़र आ रहा है, that's a 4.2-inch multi-info display that you are going to get. It's a full color display जैसे Baleno में था, first generation Baleno when it came out. It's going to be very similar to that in terms of the colors, in terms of the graphics, etc. Speedometer जो आपको नज़र आ रहा है, that's again it doesn't have the bezel, लेकिन आप बाजू में एक छोटी सी झलक डालेंगे तो on the tachometer you have a bezel that you will see. Now in terms of the steering wheel पे आपको controls नज़र आएंगे. Those are for the cruise control on the right hand side and music and telephony on the left hand side, but lower in variants में आपको cruise control भी नहीं मिलने वाला है. जो infotainment है, that is very similar to what we've seen on Baleno. 40 connected features आपको इसमें मिलेंगे. नीचे की तरफ आपको automatic climate control के controls भी मिलने वाले हैं. That they've done a new switch gear for that. That's a good looking design, but the steering itself, it looks very similar. Now in terms of the seats, they have done a new design, new textures on the seats. Now this is going to be all black, like I said. So that is what you're going to get in there. And like I said, it's all black. The infotainment is driver centric. It is turned towards the driver. और वो wrap around effect जो हमने देखा था, that continues there as well. Now in terms of the USB ports, आपको इसमें 3 USB पोर्ट मिलने वाले हैं. सामने की तरफ आपको एक वायरलेस चार्जर मिलने वाला है, और पीछे की तरफ आपको 2 USB पोर्ट्स मिलेंगे, 1 USB-C and 1 USB-A that you can see there. पीछे rear AC vents as well, और आगे की तरफ आपको एक 12 volt socket and 1 standard USB-A port is what you are going to get. So lot of crowd here. Sorry, I hope you can bear with me. मैं आपको जो कुछ भी दिखा रहा हूँ, I hope this is so far a little decent. इसमें 2 gearbox options है, of course. One is a 5-speed manual, the other is a 5-speed AMT, automated manual transmission. आपको इसमें CVT नहीं मिलने वाला जो international variants पे आपको मिल रहा है. That you are not going to get in India, and that is for cost constraints. So this is essentially the car in a nutshell. जैसे मैंने कहा, this is the new novel orange color. There's also a luster blue color. There are a total of 9 new colors, जिसमें आपको 2 dual tone options देखने वाले हैं. One of which is right here, the orange plus the bluish top. I think that bluish tops that looks really good, especially daylight में ये बेहतर लगेगा is what I think. So वो हम आपको दिखाएंगे रिव्यू से. जैसे मैंने कहा 16 मई के आसपास रिव्यू आने वाला है. So definitely stay tuned to Overdrive for it. And I think I have covered everything else that there is to show in this particular car. Now Maruti Suzuki has launched the new Swift at a starting price of 6.49 lakh rupees. तो 6.24 के आसपास outgoing Swift थी base model, तो अभी 6.49 हो गया है. So not a big jump there, about 25,000 rupees more. And in terms of the top end variant, it's going to be 9.64 lakh rupees. So that is also not a big departure. 9.28 lakh के आसपास top end variant था of the outgoing Swift. So
Tell me what do you think about the pricing. I think they have managed a really good pricing. Already 3 million Swift, मतलब 30 lakh Swifts already Indian roads पे हैं, और I'm sure this is going to add a few more to those. So yeah, so that's that. This is the Swift. Now I'm going to just hop over to the other side and just show you one more color. Now this is going to be the accessorized version, जिसको हम यहाँ पे देखते हैं एक बार quickly. So this is going to be the silver color, और इस silver color पे आपको accessories नज़र आएंगे. This is called the Racing Roadster accessory package. So you'll see the really big enhanced skirts on the bumper, and then you have these decals on the bonnet that you see here. There you go. So you'll see those decals right there. और बाजू में भी आपको ये व्हील आर्चेस के ऊपर से भी क्लैडिंग नज़र आएगी, साइड स्कर्ट्स एंड एवरीथिंग. आई थिंक इट्स अ वेरी गुड लुकिंग पैकेज. इवन द मिरर्स have a little bit of graphics on them that you will see right here, and then there are the window visors also. So ये कुछ ऐसे additional packs हैं. We've already seen Maruti do this with a lot of their cars, where they launch these accessory packs, so to say, and we have some for the Swift as well. I think this one is looking really good. Maybe I would just lose those decals. Those decals are a bit much, but ये जो body kit है, मेरे ख्याल में body kit काफ़ी बढ़िया लग रहा है, at least at the front. Maybe not the wheel arches, but at least at the front, I think the body kit is looking really good. तो आपका क्या ख्याल है नए स्विफ्ट के बारे में? Let me know in the comments below. जैसे मैंने कहा, इसका रिव्यू हम डालेंगे youtube.com/odmac पर, तो definitely stay tuned to that channel for more content. Until the next one, take care and drive safe.